अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे पास तोशिबा का एक लैपटॉप है जिसका मॉडल तोशिबा टेक्र Z40C है। आज हम इसको डिसअसेंबल करना सीखेंगे। उसको डिसअसेंबल करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसको डिसअसेंबल करना शुरू करते हैं। डिसअसेंबल करने के लिए हमारे पास कुछ स्क्रूज हैं, इनको रिमूव करेंगे। ये तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्क्रूज को रिमूव कर लिया। अभी हम इसकी बैक प्लेट को रिमूव करेंगे। बैक प्लेट को रिमूव करने के लिए इस तरह का टूल की जरूरत होगी। ये तो फ्रेंड्स बैक प्लेट को रिमूव करने के बाद हमें मिल जाती है एक बैटरी, मदरबोर्ड, रैम, ये इसकी SSD M.2, ये वाईफाई है, ये कुछ USB स्लॉट्स हैं। तो इन सब को हम अभी डिसअसेंबल करेंगे। सबसे पहले हम बैटरी को रिमूव कर लेंगे। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद अभी हम इसको रिमूव करेंगे। जी तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बैटरी को रिमूव कर लिया। बैटरी इसकी थोड़ी फैट है, यानी कि बैटरी ख़राब है, तो हम बैटरी को भी चेंज करेंगे। ये इसकी SSD है M.2 256 GB की। ये इसकी रैम्स हैं PC3 8 GB 16 GB के 8 GB की 2 स्लॉट्स। इसकी HDMI और मेमोरी कार्ड के लिए ये इसकी स्ट्रिप है। ये कीबोर्ड की स्ट्रिप है, कीबोर्ड और कीबोर्ड की बैकलाइट की, इसको रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम रिमूव करेंगे वाईफाई को।
there's always this piece of me that's yours always. Even though our time is short, there's always this piece of me that's yours, yours, yours. ये तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मदरबोर्ड को रिमूव कर लिया। अभी हम उसको साइड पर रख देंगे। अब इसके एलसीडी वाले हिंज को रिमूव करेंगे और एलसीडी की डिसअसेंबली स्टार्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। But I can't help my heart. Even though our time is short, there's always this piece of me that's yours always. Even though our time is short, there's always this piece of me that's yours. Our time is short, there's always this piece of me that's yours always. Even though our time is short, there's always this piece of me that's yours. I can't help my heart. Even though our time is short, there's always this piece of me that's yours always. Even though our time is short, there's always this piece of me that's yours, yours, yours. ये तो फ्रेंड्स हमने हिंज को खोल लिया। अभी हम इसके इस टच पैनल को खोलेंगे क्योंकि ये लैपटॉप टच था। अभी हम इसके टच पैनल को खोलेंगे, उसके बाद एलसीडी को रिमूव करेंगे। जी तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका टच पैनल रिमूव कर लिया। ये इसकी एलसीडी है फुल एचडी 1080 रेजोल्यूशन के साथ। ये इसका वेब कैम है। ये वायर्स इसके वाईफाई एंटीना के लिए हैं। ये इसके एलसीडी की केबल है। ये टच पैनल की केबल थी और ये इसके वेब कैम की केबल। इसमें हमें मिल जाती हैं दो 3.0 यूएसबीज, एक इथरनेट लैन पोर्ट, एक 3.5 mm जैक ऑडियो, HDMI और मेमोरी कार्ड के लिए। ये इसका प्रोसेसर हीट सिंक है कि काफ़ी डस्टी है, इसको हम सर्विस करके वापस लगाएंगे। और ये इसका मदरबोर्ड। इन सब को हम वापस असेंबल करेंगे
इसको डिसेबल करने का मकसद आपको टीच करना था इसको डिसेबल कैसे किया जाए। वैसे ये लैपटॉप प्रॉपर काम कर रहा था, वर्किंग में था। अभी हम इसको वापस असेंबल करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके सारे पार्ट्स को वापस जोड़ दिए। अभी हम इसकी बैक प्लेट लगा के इसको पावर ऑन करके चेक करेंगे। ये तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लैपटॉप पूरा असेंबल कर लिया। अभी हम इसको पावर ऑन करके चेक करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, लैपटॉप ऑन हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको डिसअसेंबली पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।